Hello and a warm welcome to The Pulse, your fortnightly show that gets you issues that impact the larger society. I'm Neelu, vyas. In today's episode, we look at how India has travelled along the road when it comes to tackling HIV AIDS. The impact of the HIV AIDS control program has been significant, with more than an 80% decline in estimated new infections from the epidemic's peak in 1996. In fact, if you look at the latest HIV estimation report of 2017, AIDS-related deaths have declined by 71%, prevalence rates have halved, but still many challenges remain. Can India become AIDS-free by 2024 or 2030? Joining me, some brilliant minds who are working at the grassroots level and also devising policies. I welcome all of them. Mr. Bilali Camara, he is the country director of UNAIDS India. Welcome to the program. Next to him is Alok, Saxena, joint secretary of the National AIDS Control Organization. Next to him is Ashok Alexander. He's the founder director, Antara Foundation, and he's also recently authored a beautiful book, A Strange Truth, in which he has dwelt on the contribution of the sex workers and on the contribution of the community. We'll come back to him also during the course of the show. And next to him is Mona Balani. She's the board member of the NCPLHIVA, that is a national coalition of people living with HIV AIDS in India. And also joining us on the program are a wonderful set of audience. These are people who are living with HIV AIDS, and they have come here. They have many questions to ask, and we'll also go back to them on the problems which they are facing. So I welcome all of you on the program, the guests and the audience, both on the program. And I would like to begin with you, Mr. Bilali, that when you have to look at the accomplishment of India so far, and when India's journey in fighting out HIV AIDS started way back, many people had said that, by 2010, India would become the AIDS capital of the world. But nothing of that, thank God for it, nothing of that sort has happened. But are you really feeling happy and satisfied at the progress which India has made so far? Thank you very much for the opportunity. Happy, yes. Satisfied, maybe. And why I'm saying so, if you look at the journey, it has been very well, if we can say that term, from, let us say, 2000 to 2010. But from 2011 to 2017, what we have seen is certainly there is progress, but it is not what I would like to see. And I can understand it. It is the last mile. It is always difficult. But I believe we have to really join forces now to really look at this, because by 2020, we have to really achieve key milestones, such as the 1990, such as the reduction of new infection by 75%, the reduction of new, I will say, death by year, the same amount, and the elimination of mother-to-child transmission of HIV. Those are challenges which we are facing. I'm quite sure that learning from the past, we can reinvent ourselves, reinvent our processes, reinvent our strategies to see how better we can get this issue under control. I'm confident that India can do it. But we really have to join forces as much as we can, create more opportunities, make sure that really we are engaging the community as much as possible, making sure that we are really reaching out to the one who can really help us to achieve the last mile together. Okay. Mr. Saxena, if you look at the National AIDS Control Program, it was divided into various phases, phase 1, phase 2, phase 3, and now, as he said, that we are on the last mile. When now you look back at the journey you have traveled and India has traveled so far, what do you have to say about the program? Has it been really targeted, focused? See, it's globally been acclaimed as a very successful public health program, and there are various reasons for that. One, of course, has been that, as you said at the outset, that at one stage it was being feared that this epidemic might just explode in this country. That has not happened. The program has been able to turn the tide of the epidemic. Actually, it has not remained an epidemic anymore. There's many things that happened. One was that, research and discoveries and scientific work kept hand in hand with the way the program developed. Okay. So when we started, the National AIDS Control Program was started 26 years ago.
it was about talking about, at that time the challenge was talking about HIV AIDS, because there was such a huge stigma attached to it, and it was certain death. Stigma was because it was concentrated in populations which already were marginalized or stigmatized, like the sex workers, like the men having sex with men, injecting drug users, hijras and transgender populations. So we started by talking about it, prevention, then communities. The biggest success here is that it's a program led by communities, where every other agency just facilitated. Yes. But it was the communities, they themselves worked, they themselves provided the leaders. And today, many of the people who are sitting here in the audience here, they've been associated with the program for 25 years. They've been the leaders. And even today, this is one disease control program globally, where even when we change the regimen of medicines, and it is with their consultation. Absolutely. And I think there are very few countries where communities have taken such an active role. And in fact, on the role of the community, I would like to come to Mr. Alexander. You've just recently got a book. If you can just show it to the audience. This is the book which Mr. Alexander, Ashok Alexander, has just penned. It's been launched, A Stranger Truth, the book is called. And you've basically talked about the contribution of the community, contribution of the sex workers, how they've led to make this entire AIDS prevention program a successful program. What, according to you, in your book, is the key point on which you would say that this program is successful? Yes, I had the privilege of being involved with the AIDS campaign in India from 2003 to 2012, which were critical years. And in that period, we saw really what was one of the great public health successes that India has had. I might add that it's not a recognized success as much as it should be because of the stigma that still prevails around the communities and the virus itself. But what struck me most when I went out into the field, first I had a simplistic view that you must tell people to use condoms, must tell people to keep safe. But the communities knew all that themselves. But how to go about delivering services, how to deal with the issues of their own vulnerability, the kind of violence that they face day to day, finally the solutions came from them. The implementation came from them. And I might say there was a level of sheer heroism that came from the men and women who fought in this campaign against HIV. We started in a situation in 2003 where, frankly, the government denied that we even had an AIDS problem. 5 years later, it had the most fully funded and complete HIV program in the world. 5 years after that, the virus was in decline. I just want to say one other thing. This is a very clever virus. Country after country has made the mistake of declaring victory prematurely. And there's something which we call a hockey stick principle in HIV. Where the virus comes down and comes back up again. We have to be very careful. But India hasn't said that it's got the victory yet. Well, not yet. I think there are pockets within India we have to be very worried about. So from what you say is that India doesn't need to be complacent at the moment. No, absolutely not. Mona, coming to you now. You've been working with the people who are living with HIV AIDS. And when you see the kind of change which you see in the way the community is behaving, the way the society is behaving, with the way, the people who are treating the people living with HIV AIDS in there. So what is the kind of real change which you see over all these years? Actually, what the sir is saying, it's not like that HIV had succeeded because there is huge involvement of the community. That's why this disease now successfully become represent at the global. In terms of India, like Ashok sir is saying, it doesn't mean that it completion. Because we are the second or third generation who's seeing that 3 decades of HIV AIDS in India. But अभी अगर हम चौथी जनरेशन का बात करें या जो यंग लोग जो युवा लोग निकल कर आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें सो नया इन्फेक्शन जरूर कम हुआ है लेकिन हिडन पॉपुलेशन अभी बाहर आ रहा है जैसा कि आप देखेंगे कि सरकार ने अभी जो अपनी नीति लाया है कि आप टेस्ट करें और ट्रीट करवाएं सो काफ़ी सारे लोग वो जो लोग जो पहले से जानते थे कि वो HIV पॉजिटिव है और अभी ट्रीटमेंट से जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी लोगों का उसमें बहुत अच्छा योगदान है कि सरकार ने अपनी सुविधाएं बढ़ाई हैं
कि उन्होंने अपने ART सेंटर्स बढ़ाए हैं जिस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट ले सकें। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं कि अगर हम बात करें कि जो लोग एकदम से दवा शुरू कर रहे हैं, कई सारे साइड इफेक्ट्स उनको होते हैं। देयर इज द मेजर रोल ऑफ कम्युनिटी वेयर दे कैन फैसिलिटेट एज अ पीयर सपोर्ट टू बिकम ओवरकम फ्रॉम दैट साइड इफेक्ट एंड ऑल दोज स्टिग्मा which is existing in surroundings of youths and adolescents basically. Because there are a lot of challenges in the community, especially in young and adolescent community, which are coming out now. The leaders are there to guide them, but still the investment from the government side and other external donor side is much needed. Okay, so this is an important point which you have highlighted. We'll come back on that point, but let me go to the people from the community. अभी जैसा आपने सारे पैनलिस्ट को सुना, हमने बहुत सक्सेस पाई है। जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जो भारत का, उसमें बहुत सक्सेस मिली है, लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे और चर्चा बढ़ाएं, आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग वो लोग हो जो उस चीज़ से गुजर रहे हो। आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें थी, आपने बहुत सारी जनरेशन्स को देखा जो इन प्रॉब्लम से गुजरी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप आज समाज में बदलाव देख रहे हैं, और अगर वो बदलाव है तो वो किस लेवल पर आप बदलाव देख रहे हैं, और अभी क्या चेंज आया है आपकी ज़िंदगी में, एक एक करके प्लीज। अभी जब हम नाको की बात या बाकी हम लोग जो है बात करते हैं, तो ART सेंटर्स की हम लोग जो बात करते हैं, ART सेंटर्स में हम लोग दवाई लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे लोग दवाई लेते हैं और उसका इफ़ेक्टिव दवाइयाँ भी हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं OI इन्फेक्शन है जो बॉडी के अंदर जो है, दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट हैं और लोग बीमार पड़ते हैं। स्टिग्मा की जब हम बात करते हैं, उसको अगर किसी को ऑपरेशन होना है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट पे जब रेफ़र किया जाता है तो वहाँ पे आज भी स्टिग्मा है, क्योंकि डॉक्टर उसको डिनाइल करते हैं, उसको कहते हैं कि ठीक है टाल मटोल इतना कर देते हैं उसको कि बीमारी उसकी हद तक बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में उसका ऑपरेशन तक करने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम लोग NGO की तरफ से एफर्ट लगाते हैं, उस पर एडवोकेसी करते हैं, उसके बाद भी हम लोगों की भी सुनवाई बहुत ना के बराबर होती है। उस हालत में हम लोग कैसे उनका सहयोग करें, किस तरीके से हम लोग कहाँ मदद के लिए गुहार करें। हमने अभी पीछे कैंसर, HIV और कैंसर के साथ कई पेशेंट थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, रजिस्टर्ड थे, और उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। और कई हॉस्पिटल्स की बात है जिसको मैं देख रहा था। पीछे मैंने हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी से मिला, वहाँ से उनके नाम से एक लेटर इशू हुआ। उसके बाद भी हम लोग सेंटर्स में गए, उस चिट्ठी का भी जो लेटर उन्होंने इशू किया था उसका कोई असर नहीं। वो कहते हैं ऐसी चिट्ठियाँ तो बहुत आती हैं। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि ART सेंटर्स में आप जाते हैं, आपको दवाइयाँ सही मिल रही हैं, इफेक्टिव दवाएं मिल रही हैं, लेकिन जो आपके साइड इफेक्ट्स हैं उनके साथ जो आप रह रहे हो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। बिल्कुल ठीक है, मैं और लोगों से भी चाहूँगी बात करना। आप माइक दीजिए उनको। मैं एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। पहले तो मैं नाको का धन्यवाद करता हूँ खास करके कि जो 2004 में जो है उसने ARV का रोलआउट प्रोग्राम स्टार्ट किया। उससे जो है HIV पॉजिटिव लोगों की लाइफ में एक ज़िंदगी की उजाला बनकर गया। आज उसी की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हम लोग साथ में हैं, क्योंकि अगर दवाई नहीं मिलती तो आज हम लोग जिंदा भी नहीं होते। तो पहले तो हम नाको का धन्यवाद करते हैं। आज अगर 2004 और 2018 एक लंबा समय हो गया है, दवाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आज फर्स्ट लाइन भी मिल रही है, सेकेंड लाइन भी मिल रही है, थर्ड लाइन भी मिल रही है। लेकिन आज भी जो है, जबकि हमें ये कहा जाता है कि दवाई आपको रेगुलर खाना है, टाइमली खाना है, कहीं बंद नहीं करना है, लेकिन किसी कारणवश जबकि दवाइयाँ जो हमें 1 महीने की मिलनी चाहिए, 2 महीने के लिए मिलनी चाहिए, 3 महीने के लिए मिलनी चाहिए, न जाने किस कारण कहाँ से ये गैप्स हैं। तो जो दवाइयाँ 1 हफ्ते की मिलती हैं, कभी 15 दिन के लिए मिलती हैं, कभी स्टॉक आउट हो जाता है। इस वजह से वो समस्या आज भी है। तो आज भी है। तो ठीक है, इसका जवाब लेंगे मिस्टर सक्सेना से थोड़ी देर में, लेकिन आप और किसी को भी बोलने का मौका दीजिए। मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ और मेरी ART चल रही है, और मैं ये बताती हूँ कि मैं शुरू से ही मेरा जो प्रॉब्लम आती थी वो आज मेरी प्रॉब्लम बहुत काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। और जो मेडिसिन खा रहे हैं वो भी बेहतर है, लेकिन लोग आज भी टॉर्चर करते हैं। कैसा टॉर्चर? जब आप टॉर्चर की बात कर रहे हो तो कैसा टॉर्चर? कैसे कि समाज में मैंने हीन भावना से बोलना, या डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं अभी भी। और जैसे ART में जाते हैं तो ART के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा से भी कई बार निकल आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, तो इन चीज़ों को हम लोगों को प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कई चीज़ों में।
ठीक है, कोई और इस पे बात करेगा? जो भेदभाव वाली बात है, अब तो हमारे पास एक लॉ भी है जो HIV एड्स एक्ट 2017 में जो पास हुआ, उस क्या आपको लगता है कि अभी भी जो ये भेदभाव की भावना है जो पहले लॉ थी, के द्वारा जो हम जानना चाहें तो हर कोई नहीं सामने आ सकता लॉ में। सरकार के कोर्ट तक हर किसी के इतनी खर्चा नहीं है जो खर्चा कर सके वो। ठीक है, मैं और लोगों से इस पे जानना चाहूंगी। अगर हम HIV एड्स के जो पूरा जर्नी हम देखते हैं और उस टाइम से आज का टाइम देखते हैं तो स्टिग्मा आज भी है, उस दौर पे भी था, पर स्टिग्मा आज कम हुआ है क्योंकि हम लोग सामने आए हैं, कम्युनिटी सामने आई है, कम्युनिटी ने अपने बारे में बात करना शुरू किया है, हमने अपने बारे में बताना शुरू किया कि मेरे को बीमारी है या मैं सेक्स वर्कर हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ या मैं HIV पॉजिटिव हूँ। तो वो स्टिग्मा तब कम हुआ है कि मैंने लोगों का सामना करना शुरू किया। HIV का NACO का जो HIV प्रोग्राम जो शुरू हुआ उसका हमेशा मैं आभारी रहूंगी कि वो जो कम्युनिटी थी जो समाज से डरती थी, सामने नहीं जाती थी, हॉस्पिटल में अपना HIV टेस्ट भी नहीं कराने जाती थी और इतनी जानकारी भी नहीं थी कि मैं अगर सेक्स वर्क कर रही हूँ तो मेरे को HIV टेस्ट करवाना है, वो उतनी जानकारी नहीं थी। अगर वो प्रोग्राम नहीं आता तो वो जानकारी कम्युनिटी को नहीं मिलती, तो उस जानकारी के चलते हुए अपना टेस्ट कराना और हॉस्पिटल में जाके ART लेना वो एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है और वो उस हर इंसान के लिए वो प्रोसेस लंबा तब से है जब से मैं अपना स्टेटस जान लेती हूँ कि मेरे को HIV टेस्ट कराया, मैं पॉजिटिव निकली, उसके बाद मेरे को ART में जाके फिर वही सब चीज़ें फेस करनी है जो और लोग फेस कर चुके हैं। पर हम उन चीज़ों को सुधार सकते हैं अपने लेवल पे कि जब हम खुद अपने लिए बात कर सके, लोगों को अपना स्टेटस बता सके और अपने अधिकार लेने के लिए हम खुद खड़े होंगे। तो आपको लगता है, आप किसी और को भी माइक देंगे, फिर उसके बाद मैं पैनलिस्ट के पास आऊंगी, कि जो एक पहले एक चुप्पी रहती थी कि HIV के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते थे, आज एटलीस्ट आप खुल के बोल सकते हो कि ठीक है आज मुझे HIV है, मैं ट्रीटमेंट लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवेयरनेस का जो इशू है, जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को कभी पता भी नहीं होता, तो अवेयरनेस एक इशू है। जब आज आप बोलने के लिए तैयार हो, अवेयरनेस का अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास एंड अपर क्लास में भी अवेयरनेस की कमी है। मतलब उन्हें यही नहीं पता कि अगर वो HIV पॉजिटिव हो गए हैं तो कहाँ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल अभी फरीदाबाद एरिया की बात करता हूँ, हरियाणा एरिया में इतना इशू बढ़ता जा रहा है और मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 ऐसे ट्रांसजेंडर को रजिस्टर कराया है काउंसलिंग करके और उनके फैमिली काउंसलिंग करके, तो अपनी मेडिसिन पर अब आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वो कब से पॉजिटिव है। अगर मैं सर से अगर बात करूं NACO से कि हमारा TI प्रोग्राम चल रहे हैं, TI प्रोग्राम में आज तक मैं खुद 5 साल तक TI प्रोग्राम में काम कर चुका हूं, आज तक किसी टॉपिक को लेके बात नहीं की जाती, अवेयरनेस को लेके या कुछ चीज़ को लेकर। अगर कम्युनिटी DIC में हम लोग बैठे हैं, ठीक है, DIC में हम लोग यहाँ, अगर हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, अपने दिल की बात कर रहे हैं, अपने हर चीज़ को लेके आप कैमरे के आगे बात कर रहे हैं, अगर हेपेटाइटिस की किसी चीज़ के बारे में बात करें, उनको नॉलेज ही नहीं हेपेटाइटिस क्या है। HIV की बात करें, अरे नहीं HIV को क्या, ये हमें तो नाच गाना चाहिए, या LGBT कम्युनिटी हो या हिजड़ा कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सब यही करते हैं। ठीक है, अगर एक इशू और है इसमें कि अगर मैं हिजड़ा कम्युनिटी से हूँ या मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ और मैं TI में जॉब कर रहा हूँ, हाँ, और वहाँ पे एक इशू निकल के आता है कि उनकी सैलरी, जो जॉब करने वाले हैं उनकी सैलरी 3-3, 6-6 महीने से नहीं आ रही है, और वो क्या काम करते हैं, बाद में पेट पालने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, वही सेक्स वर्कर में। तो ये भी इशू निकल के आ रहा है कि जिनकी सैलरी 6 महीने से नहीं आ रही है, सेक्स वर्कर में जा रहे हैं, ज़्यादा पैसों के लिए उन्होंने सेक्स वर्कर किया, वहाँ से पॉजिटिव होके आ रहे हैं। ओके, ठीक है, आप लोग के पास वापस दोबारा दूसरे राउंड के लिए आएंगे आपके पास। I'll go to Mr. Saxena. From what all we've heard, we've seen that of course India has traveled a long distance, an accomplished journey we've had, but still there are a lot of challenges when it comes to people living with infections. How do you deal with them in the long run? Do you think that's an issue, as what is being pointed out by the first person here? Each issue that they've raised is important. Okay. All the ARVs and all the entire testing is done free of cost for all of them. And almost 95% of the people living with HIV are on, who are on ARVs are through the government program only. There could be, see, it's a huge program. It caters to almost more than 1.2 million people to whom we give ARVs and we test them regularly. Okay. So there are instances when supplies do not reach places, and then the dispensation that is given to them could be for a shorter period than 1 month. But we are trying to reform that, and now
for those patients who are stable. See, another problem here is of adherence. Because it's a lifelong treatment, adherence is important. If somebody abandons the treatment midway, then it can have debilitating effect. Right. So that is one reason why that the normal practice is every 1 month you come back to the center to get your medication so that there is some kind of a control over adherence. So you don't prescribe to a method where people get medicines for 2 months or 3 months? They come back to the... No, so this is the default mode. Okay. But then there are patients who are very good, who are not only good to themselves, they also help others. So there is now a multi-month dispensation, but only for those who are stable. Adhering to it properly. Yeah. Okay. So this is one issue. Yes. Now the other issue was about stigma. Now about stigma, as you yourself said, this act has been passed. Now nobody, आप में से किसी को कोई अदालत जाने की जरूरत नहीं है मोरनी, अगर कहीं पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. एक्ट के अंदर हर राज्य में ओम्बुड्समैन होंगे जिनके पास न्यायिक पावर्स होंगी, तो आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ एक पेपर पे लिखकर उनको शिकायत करनी है और वो जिसके खिलाफ आपने शिकायत करी है उसको बुला सकते हैं, उनके पास पावर्स होंगी आपको जस्टिस देने के लिए. तो उस एक्ट में हमने यहाँ से इन लोगों के लिए सहूलियत देने के लिए, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको कि डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़े, so that provision has been made under that. Okay. Yes, Mr. Alexander, you were wanting to say something. I want to say this, that it's very important, the whole issue of stigma and of community involvement. We also have to ask ourselves, where are the parts of India where we have the most attention is called for, because we can't talk of India as one mass. And I, for one, am seriously concerned about the situation in the Northeast. Where prevalence is over 1% and 3 states are in high risk. We talk about injection drug use coming up in parts of northern India. So this is something I'm sure NACO is paying attention to, but it's a very, very tough challenge to take up. So, Mr. Camara, as Mr. Alexander has just pointed out, that the high prevalence rates in the Northeast, and how serious is this challenge? In pockets of Northeast, of course, India, you can't see that as one mass. Yes. So in Northeast and states like Maharashtra also, you have a high prevalence rate. So how would you look at the current scenario in these pockets, the vulnerable pockets of the country? I think I would like first to touch a little bit on the HIV Act. And as I said, I have seen many acts in my life, and this is one of the most powerful I have seen. I really have to admit it. Number 2, in India, it is one of the acts which covers not only the public sector, but also the private sector. So that is really the innovation which came in with this act. And now I think we have to make it work because it is one of the best pieces of legislation which we have in the world. And I believe it has been implemented also at a very fast rate. Exactly. So what is certainly important, with the support of the community, of course, what is important, and we've had this discussion among ourselves as donors and as partners. We know that we have 15 states which account for 92% of all the people living with HIV AIDS. Right. We know in those same 15 states, we have 90% of all the new infections. We know in those 15 same states, we have 90% of all the elimination of male-to-child transmission needs. So those are the 15 states which we know when we make a difference, we will really succeed. Okay. What is important as message? It is true, we may have a prevalence somewhere high, going up, but we are talking about disease elimination. We are talking about public health. We have to go to the absolute numbers. You have mentioned Maharashtra, it is a very good example. Gujarat is there, another good example. MP is there, another good example. Even Telangana is another good example, which is also... So what is important is, if you want to do the 90-90-90, achieve the 90-90-90, you want to achieve the elimination of male-to-child transmission, you have to go where the issue is. Right. And as my brother will always tell us, go fishing where the fishes are. Right. That is very, very critical and that is very important. But Mr. Alexander, what this 90-90 formula which you're talking about, yes. Looking at the constraints in which the country is right now and the kind of problems which are being faced with by the people living with HIV/AIDS, how achievable do you think is the formula of 90-90? Well, you know, at some level you can't keep thinking of this as,
go where the fish are, where the very high numbers are. Okay. Because if you go to a place like Nagaland or Manipur, these are bigger than many African countries. Okay. And there is an epidemic there which is, I think, been neglected for some time. Okay. A lot of attention has gone, as it should be, in many parts where there's higher prevalence, larger populations. But we cannot meet those targets that we want to and feel satisfied in a humanitarian sense if a pocket of India continues to have high prevalence. And it's a very complex epidemic because it's driven by injection drug use. Absolutely. And there are hills and valleys, the topography is different, there's insurgency. Right. It's a huge challenge we have to take up. I think we're all agreed on that. We're Absolutely. not disagreeing on Mr. that. Saxena? I do believe, let Yes. me just add one point. At this point where we are, when we look at the first 90, we are missing 200,000 people living with HIV. That's all we are missing. Okay. We have 1.7 million who are tested, who know their status. We are missing those 200,000. How we can reach that? We will not say, don't make services available at all levels. Okay. What we want is really to say, put more emphasis on where it matters the most. That's what we really are trying to say. And what do you think has been the reason why Northeast has had a high prevalence rate and why the entire AIDS control program has not been very targeted in the vulnerable pockets of Northeast? No, that's not the fact. Okay. It's been targeted. So what is the reason for the I'll difference tell you. then? Actually, the question and the answer were both given by Dr. Alexander, and that is that there is no room for complacence Okay. in this program. So, and we have no time to sit on our laurels. That's what we've been saying. You know, this IDU-led, that the injecting drug user-led epidemic is there in pockets of Northeast. Okay. It's also reared its head, as somebody in this room indicated, in Uttar Pradesh. Yeah. Of all the places you find around Kanpur, it's rearing its head. Right. So it's coming up in pockets. Right. There are two things which my friends on left and right are saying. One is that 90 we have to achieve, and there is no compromise on that. But that does not mean that anybody is stopping anyone to go and do a concentrated exercise in Mizoram or Nagaland or Manipur. Exactly. And, or even in West or in the central UP. Right. Yeah. So that's what we are doing Right. with the community help, with, but you know, the problem that has happened in Mizoram, particularly in the Northeast, is where NACO's and the state AIDS control societies' total concentration is there, it's about to become that is a very dangerous thing, generalized epidemic like Southern Africa. Absolutely. We are trying to control it, and it should not. Okay. But what happens there is that people take drugs, they indulge in sex, and then that becomes a carrier, and then they migrate from one place to the other, and then it spreads. Okay. So important there is that they should be aware of the risks that they're exposing themselves and to their partners, whether they're the needle syringe sharing partners or sexual partners. Right. That's important. मोना, जब जो HIV एस्टिमेशन रिपोर्ट है वो जब बात करती है हाई रिस्क पॉपुलेशन की, तो उसमें सेक्स वर्कर्स होती हैं, मेन हैविंग सेक्स विद मेन, इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स की बात होती है। इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स की संख्या देखा गया है कि बहुत बढ़ रही है। आप उन लोगों के साथ काम कर रही हैं, आप उनसे बात भी करती हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स की? जी, अभी जैसा सर ने भी हाईलाइट किया कि लाइक इट्स not like when we started the intervention, it was kind of universe problem in the India. We designed the program like uniform for the India. But yes, some of pockets which have high prevalence, they made like more concentration in their pockets. And now the trend has shifted from Northeast to North India. We can found the more IDUs, more drug user population. But if you see the other trends also, like after 30 years, there are a lot of change in the education trend, in the employment trend, and also like social media is a major factor for that. So if you see the community trend change, right, and if you see the political trend change, if you see the entire local traditions trend change, so that all becomes a focal reason for that. Okay. So that's the reason. Like migration is too high in Northeast. Similarly, in North India also migration is too high. Now the employment and all these things are changing. So that's why like this concentration in this population is more. And the other thing is
needs are different now from the community side also. अभी हमारी आवश्यकताएं भी बहुत बदल गई हैं. जो अगर मैं बात करूं अपनी कि मैं जब 90s में या 2000s में जब मैं नेटवर्क से जुड़ी, when I connect with network, that time was my need was different. Right. But now if I am seeing the population which are interacting with the networks and population where the high numbers of the groups, so that is different. Okay. So एक वो भी एक कारण है कि हमारी आवश्यकताएं बदल रही है, हमारे जीने का तरीका बदल रहा है, हमारे राजनीतिक निर्णय बदल रहे हैं. So all together things are the reason. Right. Mr. Saxena, before I go to the audience, I would like to know from you that what is the entire set of change, the behavioral change which we see, and social media is a very important part of that. What is the impact because of the social media on this entire treatment cycle, the behavioral pattern which you see amongst the community? Is that a challenge now for the government also? I mean, what is the kind of impact which you see because of social media? See, it's a challenge for the program. Okay. See, internet penetration and people having access to the net is a very good, it's a very empowering thing. Okay. But simultaneously, also it frees people from so many shackles. So, while 25 years ago, if somebody had to find a sexual partner, whether through what is called hooking up or buying, one had to go to a physical space and find a partner. Now you have dating apps, now you have WhatsApp, there are groups. So the challenge for programs like ours is how do we connect to them? Because as I said, initially when the program started, we were talking about it. Okay. अब आज चैलेंज हम किन से बात करें? बिकॉज लोग तो प्लेटफॉर्म पे जाके अपने लिए साथी को तलाश कर रहे हैं. तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन द प्रोग्राम इज दैट वी आर इंटरवीनिंग इन दोज वर्चुअल स्पेसेस थ्रू peers only. So Right. people, so somebody who is a MSM, if he is there on or she is there on the platform, we are asking them कि आप उनसे बचाव की प्रिवेंशन की तो बातें जो लोग करें. फिजिकल स्पेस में हैं ही नहीं, आप उनकी मैपिंग कैसे करेंगे? मैं इसके पास और इस सवाल को लेकर मैं ऑडियंस के पास भी जाऊंगी. आप पहले उनके पास जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा. अच्छा ठीक है, चलिए. मैं यस. I think one advice which I have shared with NACO is yes, if you want the modern technology or the social media has its challenges, but it has a lot of advantages. Okay. Because I will give you a good example. When you want to send, for example, we have had it in many countries. You want to send a message about the prevention of multi-child transmission, about, I don't know, any behavioral change, etc., etc. When you have a contact, I'm receiving it every day. Go to do your health fitness, go to do this. There is this institute which can offer you this. If you do it properly, in the case of Nigeria, for example, every 3 months we were reaching 179 million people. Right. With HIV AIDS messages. I think that is an advantage which we have also. We can take No, but Mr. Camara, as Mr. Saxena just pointed out, that because you cannot map the people who are contacting the partners through social media, so is that one of the key reasons you would see for the rising number of new infections? I think what is important into this is, as we use the social media, we have to use it in such a way that we get also the messages to those people who are using, and that's what the JS is saying. To really, we have to invade that virtual space. Okay. We have to occupy it and occupy it with the right information. Right. Because what also is danger into it is if many people are going on the internet, they're getting any fake news. Generally, they say it's now very popularly in the US. Absolutely. We have to avoid that. And to avoid that, we have to really bring them the quality information coming from NACO, telling to people really what the real issues are and how to go about it, about them. That is really very, very important. But there is a serious advantage, a big advantage in really and India, I mean, everybody has almost 2 cell phones. We have to use it. Right. I'll take your question to the audience and then I'll come back to Mr. Alexander also on this. अभी जैसा मिस्टर सक्सेना को आपने सुना कि अभी जो सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जो लोग पहले फिजिकल स्पेस में जाते थे, अपने सेक्सुअल पार्टनर्स को ढूंढते थे, तो आप उनकी मैपिंग कर सकते थे, आप बता सकते थे कि हाँ ये बंदा यहाँ से आया है, वो वहाँ जा रहा है. लेकिन क्योंकि अब पूरी जो डेटिंग साइकिल है, जो सेक्सुअल पार्टनर्स को एक जो
को जो प्रक्रिया है खोज करने की वो बहुत ज़्यादा कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ों से हो रही है, तो ये क्या आप लोग की कम्युनिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज आप इसे मानते हैं और इसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? जैसे कि अभी जैसे ग्राइंडर है, ग्राइंडर एक साइड है LGBT कम्युनिटी के लिए, तो उसमें जब हम लोग कोई भी LGBT कम्युनिटी का हमारा फ्रेंड्स स्टेटस डालता है तो कोई ये नहीं डालता कि वो HIV पॉजिटिव है। कोई 10 में से कोई 1% ऐसा होगा जिसने डाला होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टेटस है ज़्यादातर नेगेटिव होती है। दूसरी चीज़ होगी मसाज पार्लर। मसाज पार्लर में भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी चाहे वो मसाज पार्लर हमारे फीमेल सेक्स वर्कर के लिए हो या LGBT कम्युनिटी के लिए हो, तो अगर कोई क्लाइंट ज़्यादा पैसे देता है तो वहाँ पर कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके। और अगर हम लोग टेस्टिंग की बात करें तो हमारे वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है कि जो वहाँ पे मसाज पार्लर का बंदा है उसका भी ये अधिकार है कि वो अपना टेस्ट कराए, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। आप लोग कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप जो अपना स्टेटस डालते हो व्हाट्सएप पे, तो ऑब्वियसली आप ये नहीं डालते हो कि आप एक HIV पॉजिटिव हो, आप बात करेंगे? जैसे इन्होंने मेरे काबिल दोस्त ने बताया, जो ग्राइंडर है, फेसबुक है, उस पर हम नहीं डालते हैं कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो मसाज पार्लर्स हैं तो वो इश्यूज़ भी हैं बहुत सारे। कई बार मसाज पार्लर्स में एंट्री नहीं है कईयों को। अगर हम जाकर बोल दें कि हम एक NGO से हैं, हम ऐसे HIV के लिए काम कर रहे हैं, तो वो साफ कह देंगे बाहर जाओ, आपकी एंट्री नहीं है। ओके। और कई ऐसे मसाज पार्लर्स हैं जिनमें हम घुस भी जाते हैं अगर, तो वहाँ पर बात करें तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको HIV का इन्फेक्शन है या जो भी। हाँ, आप वो आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। This is a very big challenge, and I would like to come to you, Mr. Alexander, on this. That this whole bit about discrimination that we talk about, these are all hidden discriminations. That if people living with HIV/AIDS, they want to mainstream themselves, they want to come to places, work, employ themselves, but even then the employers don't see them that way. I mean, these are all hidden discriminations. So, where are we heading to then? Well, if I look at it a little, it is a discrimination. It will always be a discrimination. It's a very serious issue. Okay. But if allow myself to be a little bit more optimistic, if you compare what the situation was 10 years and more ago, you couldn't use the word at all. Okay. The idea of mentioning that you're HIV positive was, I remember a sex worker telling me when I asked her, why don't you go and get yourself tested? She said, if I get myself tested and I declare that I'm positive, I'll be thrown out of my house, my children will be thrown out of school, I will lose the profession that I have. How can I even think of doing that? That situation has changed radically. Having said that, the level of discrimination, the level of stigma is something we can never say that it's ever reached a situation where we can feel comfortable about it. So I empathize a lot with what our friends are saying right मोना, now. जो मिस्टर अलेक्जेंडर ने कहा, आपको लगता है कि कभी सोसाइटी पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो पाएगी? क्योंकि जो कह रहे थे सर कि लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसे जैसे दौर बदलता है वो भी बदल जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि इनको मसाज पार्लर में एंट्री नहीं मिलती, अगर ये बोल देंगे, अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देंगे कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो शायद फिर उनको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये आपको लगता है कि सोसाइटी पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन फ्री कभी हो सकती है? हो भी सकती है। ओके, चलो, we'll go by what you're saying. We are very optimistic. Okay. लेकिन वो एक आइडियल सिचुएशन है जिसे लाने के लिए शायद सदियां लगेंगी हमें। Okay. और मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत है। Not only like government side, even also like society side also. मैं वापस ऑडियंस के पास जाऊंगी, फिर मैं वापस आती हूँ दूसरे सवाल पैनलिस्ट को लेके। आपके परिवार के अंदर जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, उनका क्या रवैया होता है आपके प्रति? हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने बताया, शुरुआती दौर में जब मेरे बारे में पता चला था तो मुझे गांव से और परिवार वालों से स्टिग्मा मिला था। बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। मतलब मुझे उन्होंने आपको निकाल दिया गया था। जब मैं दिल्ली आया, बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से मेरी वही मुलाकात कारण हुई। था कि आपने अपना गांव छोड़ा? बिल्कुल, ये कारण था। लेकिन आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोगों ने अपने वर्क को आगे लेकर के आए, और मैंने अपना स्टेटस, बल्कि दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी का एक ऐड आता है कि मैं ART के साथ सामान्य जीवन जी रहा हूँ।
आप भी जी सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट स्टेटस ओपन किया था और मैंने ऐड दी थी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके परिवार का क्या, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया वापस? आज वो परिवार भी मेरे साथ है और वहाँ के गांव और समाज के लोग भी मेरे साथ हैं। Lovely. I think we should give him a round of applause for this kind of a change. और उस ऐड को देख के मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मेरी ऐड जब हमारे जो मकान मालिक थे, ऑनर थे, वो मेरी एक ऐड लगी हुई थी मेट्रो के अंदर में, तो उन्होंने देखा कि मैं HIV के साथ सामान्य जीवन जी रहा हूँ। उन्होंने मुझे कॉल लगाया कि साहिल तुम्हारी फ़ोटो लगी हुई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ, मैंने उसको, मेरा वो अट्रैक्शन था बोलने का कि क्या मकान खाली कर दूं? कह रहे नहीं बेटा। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी एक ऐड आ रही है और मेरा किराएदार का फ़ोटो हर जगह लगा हुआ है। और आज भी मेरी ऑफिस, हेड ऑफिस मेरे उसी मकान में है। तो समाज का नज़रिया चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं सभी लोगों के लिए नहीं है। आज भी स्टिग्मा है। मैंने जैसे पहले बात किया कि हॉस्पिटल्स के अंदर स्टिग्मा है। अदर ART की बात करें, ART सेंटर में कोई स्टिग्मा नहीं है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दवाइयाँ मिल रही हैं। हाँ, आपके अलावा और एक दो लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में चीज़ें कैसे बदली हैं। जो पहले आपके रिश्तेदार थे, जो आपको हीन भावना से पहले देखते, कुछ और लोग भी बात करें, बहुत सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। हाँ, उनको माइक दीजिएगा सर प्लीज़। मैं 2010 में HIV पॉजिटिव हुई थी। सबसे पहले मेरा हस्बैंड का जांच हुआ था और उस समय से हम दोनों आदमी थे। मैम 2012 में 28 मार्च को मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया था। उसके बाद मेरी बेटी TB हो गई थी पापा के डेथ होने के बाद, फिर HIV साबित हो गई। मैं काफ़ी सदमा में थी, जीने की चाहत नहीं थी, लेकिन NGO से जैसे जैसे मिली हस्बैंड के डेथ होने के बाद तो जीने की साहस रखी। मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरे फैमिली में किसी ने भेदभाव नहीं किया। साथ में बैठ कर के खाते हैं, सारा रिश्ता चल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं से ये गलत जगह पर नहीं गए हैं। ये बीमारी ऐसा है कि कुछ गलत काम घर में भी हो सकता है और इंजेक्शन से भी हो सकता है। लेकिन मैम HIV होने से पहले मुझे 2006 में ऑपरेशन हुआ था। गिरने के कारण छत से मैं गिर गई थी, तो मेरा एक स्प्रिंग नस होता है वो फट गया था, तो मुझे ब्लड चढ़ा था उस समय। लेकिन जब मेरी गुड़िया मेरे पेट में थी तो सारा टेस्ट हुआ था, लेकिन उस समय HIV साबित नहीं हुआ था। अभी मैं HIV के साथ अपनी बेटी के साथ जी रही हूँ। So these are some positive stories one would look at. The way the society is changing is really heartening और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से सुन के कि जब आप लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया है, समाज कैसे बदल रहा है। तो हमेशा ये नहीं बोले कि सरकार ये कुछ नहीं कर रही है या समाज ने आपको कुछ नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें में सरकार ने और समाज ने दिया है। But apart from that, Mr. Saxena, my question to you is that, you know, when you talk about this entire AIDS prevention program, obviously it was divided into various phases. It started with an initial phase. Many people have started saying that the program somewhere seems to have plateaued now. सो ये जो प्लेटोइंग एक जो दिख रही है, न्यू इन्फेक्शंस भी आ रहे हैं, तो चैलेंजेस तो कई हैं और बहुत सारे और भी चैलेंजेस हमने जिनकी बात की। तो ये जो प्लेटोइंग एक दिख रही है, ये क्यों है? इज़ इट बिकॉज ऑफ द फंड्स? बिकॉज मैं कई जगह पढ़ रही थी कि कभी कभी फंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, तो क्या उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं? आप कैसे देखते हैं? देखिए, फंड्स की मेरे हिसाब से कोई National AIDS Control Program में funds का is not a major issue. Okay. Though globally funding for AIDS control has shrunk, as he himself would say that BMGF initially started in a big way. Right. It's completely exited from AIDS control now globally. Okay. But the thing that it thinks that it has better things to do now rather than AIDS control. Okay. So that's happened. But as far as Government of India is concerned, the program remains robust, intact. And in the last 4 years, so many new things we have initiated, and each one costs money. Right. So notwithstanding the fact that each thing costs money, it's been scaled up. Okay. So what we've done is that we now have a policy of test and treat, whereas initially in 2004 when the program, when we started treatment, it was only people who were virtually dying with a very low CD4 count, they were put on treatment. Right. Then gradually it increased from 200 CD4 count to 350, 500. Today anyone who's tested positive is straight away put on treatment. And I'll go to Mr. Camara on one bit, that you know there is also a narrative that somewhere the AIDS control program should be synchronized with the TB program. Do you see that currently the need of the country is to amalgamate the two programs, because you have ambitious programs like Ayushman Bharat as well, which are too focused,
and a lot of spending is there, a lot of investment is there in those programs. So how do you see? Is there a need now to synchronize the two programs as far as tuberculosis and HIV AIDS is concerned? Yes, I want to just to add an important point here. I think Bill and Melinda Gates, they have made a mistake when they took the money out of HIV AIDS, because we were winning, they are running away. I'm sorry to use the term that way, but that is the reality. Okay. So it is a miscalculation, to be honest with you. The second point which is important is, it is true that at a certain point in time, the money, if even you look at to the natural inflation in each country, every time you can buy a pen, maybe in 2010 at 1 rupee, now it is 2 or 3 rupees. So the point which I'm making is simply that if you look at broadly to the AIDS response, you look at to the TB response, you look at to the malaria response, you look at to the nutrition response, etc., somewhere there is something which I believe we can do better. That's why in my introduction I was talking about approaches. Okay. And the HIV AIDS has developed an approach which is really community-owned, community-driven. Okay. It is a wonderful approach which we have used, and for many, many years it has been successful. Now we know, I'm honest with you, the TB program is not successful as the HIV program. We know it. On an annual basis, we have 2.7 million TB cases. Right. The reality is simply that how we can learn from the AIDS program to really get the TB program to go with is something which we have to consider seriously. Right. The reason is simply that 50% of the HIV patients die of tuberculosis. Okay. So it is an important step where we can really learn from each other, see how better we can destigmatize TB, Okay. making sure that even if you are treated for TB, you are healthy, you will always remember that you have been there. Okay. And to really see how better we can now also use that same approach to see how we can push the agenda together. Okay. And I'm quite sure that if we do it, the TB patient, the HIV patient, really try to really provide integrated services, it will be very, very helpful, because Okay. it is not necessary to divide people between diseases. Right. We know that. So that is really the principle. And we are working on it. The convergence plan is there. We are working with the National Revised TB program to really see how better we can really get the pieces together. Okay, so the new strategic plan of the government is going to really include the two, the integration of tuberculosis as well as HIV AIDS. What's your view on that? I'm not an expert on that topic, but I just want to make 2 points very quickly. Okay. One is that it's a very strong country that doesn't need donor funding anymore, whether Okay. it's the Gates Foundation or anyone else. I believe Indian government can take care of without additional funds. But I want to leave one point we may not have time to discuss. There's a debate between treatment and prevention. Okay. The strength of India's program always was that it did a lot of prevention when treatment was not available. Okay. Let us not get into a modality today where we treat only but lose sight of the importance of prevention. On the issue of TB and so on, I think there are more current experts who can talk about that. मोना, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर ऑडियंस के पास एक फाइनल राउंड के लिए जाएंगे, फिर मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूंगी कि अब आगे और क्या चुनौतियां आपके सामने हैं, जो एक नया स्ट्रैटेजिक प्लान जो एक देश बना रहा है एड्स को लेकर, तो आगे की जो चुनौतियां हैं वो आप कैसे देखती हैं? अभी सर बिलाली कामरा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसा आप बोल रहे हैं कि दोनों प्रोग्राम इंटीग्रेट हो रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लाइक अगर हम राष्ट्रीय रणनीति की बात करें और उसमें हम खासकर कुछ की इंडिकेटर्स की बात करें, सो HIV एड्स प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया कम्युनिटीज़। ओके, राइट। सो अभी टीबी कम्युनिटी, और उसमें भी अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी ऑफ TB HIV कम्युनिटी जो है वो अभी कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड है। और अगर एंटायर प्रोग्राम में अगर आप सक्सेस की बात करते हैं या सक्सेस तक पहुंच बनाने की बात करते हैं, सो इट विल नेवर हैपन विदाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज, राइट। सो इट्स डजंट मीन कि लाइक हमें सिर्फ पैसा ही उसके लिए चाहिए, बहुत सारे ऐसे हैंड होल्डिंग भी चाहिए, और दूसरा है कि कई सारे ऐसे की कंपोनेंट है
जहाँ पर हम स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन की बात सिर्फ HIV के लिए कर रहे हैं। सो HIV TB में डबल स्टिग्मा है। क्योंकि मैं खुद एक पर्सन हूँ और मैं दो वायरस और बैक्टीरिया के साथ में अगर लड़ रहा हूँ, सो कहीं ना कहीं मेरा डबल इम्यून सिस्टम डाउन है, मेरा फिजिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है, फाइनेंशियल लोड मेरे ऊपर ज़्यादा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सो कई सारे इश्यूज मेरे साथ और एड ऑन हो जाते हैं। सो सिमिलरली अगर मुझे अपने अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय रणनीति में जो चुनौती है अगर वो है, तो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कम्युनिटी को भी इंगेज करना पड़ेगा, जो TB HIV इन्फेक्टेड और अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, और उनका कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे आज आप खुद देख रहे हैं कि इतने लोग सामने आकर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम TB में बात करें कि इतने लोग आकर सामने खड़े हो जाए और वो बोले कि मुझे TB है या मैं TB के साथ में अभी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, सो बहुत मुश्किल है। सो एक ये बड़ा बहुत चुनौती। ठीक है, तो आप कहते हैं कि अगर TB और जो HIV के जो लोग हैं वो साथ में हैंड होल्डिंग करेंगे तो शायद ये प्रोग्राम और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कोई एक बंदा जो अपना फाइनल कमेंट इस प्रोग्राम के ऊपर देना चाहे? हाँ बोलिए, आपकी एक डिमांड जो सरकार से हो और आपकी क्या इच्छा है इस समय? सर मेरी नाको से और दिल्ली गवर्नमेंट से ये है डिमांड है कि आप हमें ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, पर क्या पूरा ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है? इसके साथ हमारे को इन्फेक्शन भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस C हो गया, B हो गया, अदर कैंसर भी हो गया, या हमारे कुछ सर्जरी वगैरह हैं जो इतनी पेंडिंग पे पेंडिंग रहती है। आप कह रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, वाकई हम जी रहे हैं, नो डाउट, पर जो हमारे साथ हमारे साथी हैं जो हमारे इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके बारे में भी प्लीज़ सोचिए। Okay, चलिए, on that note, I can just say that, well, a country from time to time does need a national review of its harm reduction policies. And when it comes to HIV AIDS, it has to be more focused, targeted, where all stakeholders need to come together. Remember, a general alone cannot win the war by himself. And a war is won by preparation, not by courage alone. With that, we hope India continues on its goal without any hindrances towards making it AIDS-free by 2030. With that, it's a wrap on this edition of The Pulse. Send us your feedback and comments on the email ID flashing on your screen. And on that note, I thank all my guests, Mr. Camara, Mr. Saxena, Ashok Alexander, and Mona. And a very big thank you to this wonderful audience for coming and participating on this program. So thanks and goodbye.